So, hello and welcome to Hope Tushant Yadav, and welcome to the discussion on the topic of reservation. सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ना अभी आप हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं। आप किसी कास्ट के नहीं है, किसी रिलीजन के नहीं है, आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हैं और आप रिजर्वेशन के टॉपिक पर न्यूट्रल होकर आप डिस्कशन कर रहे हैं। अपने हिसाब से अपनी जिस कॉम के हैं उस हिसाब से बात नहीं करनी है आपको। आपको न्यूट्रल होकर, क्योंकि वैसे भी आपको वहां पर न्यूट्रलिटी तो रखनी पड़ेगी, इसलिए न्यूट्रल होकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी की भी बात को काउंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट लैंग्वेज बहुत डिसेंट होनी चाहिए, है ना। डिसेंट लैंग्वेज से, अच्छे ढंग से आप पूरी अपनी बात रख सकते हैं, बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी बात रखनी है अपना हैंड रेस करेगा और वो बोलना शुरू कर सकता है, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग काउंटर में बोल सकते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जिसमें चाहे उसमें बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की बात वैलिड लगे, अच्छी लगे, आर्गुमेंट बेहतर लगे, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, साथ में अपने कॉम्प्रिहेंसिवनेस को बरकरार रखने के लिए। एक मैंने आपको टास्क भी दिया था होमवर्क का। बहुत लोगों ने मुझे रिजर्वेशन वाला टॉपिक भेजा है, बहुत लोगों ने नहीं भी भेजा है। कौन कौन है ऐसे लोग जिन्होंने रिजर्वेशन का टॉपिक अभी नहीं भेजा है, मुझको सेंड नहीं किया है? हैंड रेस करना अपना, 1 2 3। हाँ, इनकी मजबूरियां हम बाद में सुनेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगली बार से ध्यान रखिएगा प्लीज, जो हम कह रहे हैं उनको मानिए। कोई बहुत इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, कुछ लोग हॉस्पिटल में, इसलिए मैं बोल नहीं रहा, ठीक है। तो रिजर्वेशन के टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट से। कौन ओपनिंग स्टेटमेंट देगा रिजर्वेशन के बारे में, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? ऋतुजा मानने से शुरू करते हैं। ऋतुजा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले हम थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, रिजर्वेशन का मूड बनना चाहिए ना, फील ले लेते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हाँ, So hello guys, background ऐसा था कि so English या हिंदी what? किसी में भी कंफर्टेबल, जिसमें भी हो आप, ना हिंदी ना इंग्लिश, उर्दू भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। The background of this reservation system has been started from Rig Veda. Like there were Varna system, as we know, like Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. So from there it all started because the society was occupationally divided. But there was a flaw, whether the society was divided on the basis of occupation, or was it divided on the basis of their. So from there it starts, and the second theory of the reservation is said that it depends on your karma, like if you had bad deeds done in last birth, so that's why you are born into Shudra family or whatever, in Brahmin family. But in those times it was believed that it, like in Rig Vedas, it was very flexible. Like if I am Brahmin and if I am Shudra and I want to gain knowledge and turn into Brahmin, I can do that. But as we progressed, like after many years, it turned very rigid because the divide increased. Because people started taking it into like in the perspective of like birth and not the occupational basis. Like I want Varna system become rigid. Yeah. Yes. Yes. Then after the British rule, it had become more rigid because they came and they wanted to divide the diversity of India, or like diversity of India. Divide and rule. Yeah. So they thought the Varna system, which was already going on, so they thought this will be the right method to segregate the society. So because of them, the gap increased more. So the privileges divided more, and so there it started getting more rigid, and people started taking it very personally also. So there were attempts made by few revolutionaries, like Shahuji Maharaj, who was from Kolhapur. He was first to give reservations to Dalits, 50% in the government. And then there was Jyotiba Phule. He belonged to a Shudra family, and he got some association
And then we know, everybody knows. Satyashodak Samaj, I Yeah, think. yeah. And then comes B.R. Ambedkar. So he came, and then since Buddhism, he adopted Buddhism because Buddhism was against the Varna system. And Buddhism was like, it was very open to everybody. Like, if women didn't had rights, they were given rights. Like, there was no discrimination. Everybody who follows the folded paths was given the opportunity to be part. So in that way, the journey of giving equity, like giving discriminants. Okay. Got it. Thank you. चलिए किसी एक और से पूछ लेते हैं. हाँ, शुभ्रांशु. Yes, शुभ्रांशु करें, हम बताएंगे. ठीक है, बताइए. Good morning, everyone. Sir. So carrying the cue from Rutuja's point, she gave the historical situation of the rise of this reservation thing. Reservation as a term, it comes under the umbrella of affirmative action. So affirmative action is a term that originated since 60s, 1760, 1860 something, John F. Kennedy time. From USA, when there was racial discrimination between the colors and the whites. After that, the thing came to India, okay, affirmative action to be given. So constitutional framework was given also. So constitutional assembly debated about this matter, ki what kind of reservation we shall give. So there were, agar hum theory ko dekhenge, there were two kind of theories that were suggested, proposed at that time. One was the Gandhian approach, and the other one was the Ambedkarian approach. In the Gandhian approach, what Ashwini Deshpande tells, Gandhian approach, also known as that evangelical approach. We talk about spiritual evaluation. Matlab, the upper caste shall be brought to that level where they shall embrace this lower caste, whichever community, and there will be a moral regeneration about it. Moral hona chahiye, apne aap moral. hona chahiye. That will be purely moral, spiritual kind of a thing, and we shouldn't have any kind of a constitutional framework, because once we demarcate that constitutional thing, we kind of give rise, because hamara itna diversity tha ki we will give rise to various issues. So that is the discussion. That is why we are having this discussion as well. Because we didn't go for the moral regeneration path. What we did, we went for Ambedkarian path. Ambedkar said that if this thing was continuing from 2 million years, if there was historical injustice and they were victims of this, so what kind of moral regeneration we can expect going house to house from the upper caste to come and embrace this lower caste? You cannot do this in this population of India. So what Ambedkar approach was, Ambedkar said that we will go for a constitutional approach where we'll make it a legal thing, and as lex res policy, Article 14 was there, equal protection, equality before, state shall not deny equality before law, and equal protection of law. Equal protection of law was an American concept. So which is that affirmative action which I told right now. So equal protection, equality before law always said that, okay, everyone are equal. In the eyes of law, Dacian concept, in the Dacian concept, equality before law, under the lights of law, each and everyone is equal. Be you ever so high, the law is above you. So in equal protection of law, we shall go for an equity concept. Equity is more important than equality. And in that case, what happened is, an example, if I quote right now, it would be a cheetah versus elephant. If you want to race between a cheetah versus an elephant, we give a 100 meter ka race karna hai. We give a 50 meter ka advantage to the elephant because they are not equals. So since they are not equals, we cannot apply the equal law between the unequals. So that is the concept that unequals cannot be treated equally. So there came the concept of equal protection of law. Equal protection of law, by the virtue of that, what we require is, we kind to demarcate between these, who are the cheetahs and who are the elephants. तो ये जो demarcation हमको करना है, from that point came कि we need to divide this scheduled caste क्या है, scheduled tribes क्या है, OBCs क्या है, and whatsoever the caste. So from there, J.H. Hutton, 1931, the first caste census was done. That is the only caste census that was done. From that, it was scheduled caste is nothing but a schedule, means a list.
and those caste, and they were selected on the basis of three things. One was untouchability, another was a temple entry restriction, and another was the pollution proximity. Pollution, Touch, yes. you get polluted. So from Yes, that yes. they derived the caste list. Okay, these are the certain caste. Okay, these shall be called as the scheduled caste. And scheduled caste ho gaya, then tribes, as we know all this thing. And in Article 340 guarantees that there's a presidential select a commission from time to time. There is no kind of a timeline mentioned ki, okay, every 2 years or 5 years we do that. From time to time it shall be done to select what kind of monitoring of this backward class. From that the 1953 में Kakil's जो Kelkar committee हुआ था, उसके बाद Mandal commission, अभी रोहिणी commission. So that thing continued. So I want to end this now to pass it to someone, just by giving that affirmative action ka definition. So so that means ki if somebody has not written the birth of the reservation, it's from the article number 14, equal protection of law. वहां से बर्थ होता है कि आप अफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं. एंड बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट आउट किया कि वो कैसा लिंक है यूएसए से और कैसा हमने वहां से वो कॉन्सेप्ट बोरो किया. इट्स गुड. ठीक है, कुछ चीजें और ऐड करना चाहेंगे कि जब हमने लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्णन सिस्टम बना तो ये फ्लेक्सिबल था. आप जिस काम में अच्छे हैं उस काम में शिफ्ट हो सकते हैं. अगर आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कुछ भी हैं, और अगर आप बहुत विद्वान बन गए तो आप ब्राह्मणिज्म में शिफ्ट हो सकते हैं. आप अपने काम के अकॉर्डिंग आप शिफ्ट हो सकते हैं. यानी ऑक्यूपेशन वाज द बेसिस टू मेक द वर्ण सिस्टम कि किस वर्ण के आप होंगे डिपेंड करेगा आपका ऑक्यूपेशन कैसा है. लेकिन धीरे धीरे वो रिजिड हो गया, जैसा कि रुतुजा ने पॉइंट आउट किया कि वो धीरे धीरे रिजिड हो गया. और जहां पर आप पैदा हुए अब वो काम आपको करना पड़ेगा. यानी बर्थ विल डिसाइड कि आप क्या करने वाले हो, आप उसी उसमें रहने वाले हो, कभी आपका वर्ण चेंज नहीं होगा. दैट्स हाउ वर्ण सिस्टम बिकम रिजिड. और उसके बाद कास्ट, सब कास्ट, वो सब फॉर्मुलेशन होगा. लास्ट में अम्बेडकर साहब ने ये भी बोला, पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो राजी हो गई थी. उनको तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना था, वो तो एग्री थे हर चीज में. बाद में फिर गांधी जी ने बोला कि पूना पैक्ट हुआ, येरवडा जेल में गए, वहां पर पुणे में पूना पैक्ट हुआ. और बाद में हमने कहा कि ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट पर सहमत हो जाते हैं, कम से कम रिजर्वेशन दे देते हैं सीट्स का, कोई बात नहीं. लेकिन कम से कम ऐसा ना करें कि गांधी जी का ये फिलॉसफी था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तक पूरी तरह से हम उनको डिवाइड कर देंगे, तो ऐसा ना करें. और फिर गांधी फिलॉसफी उन्होंने बताया कि अपने आप हो जाएगा. और आज के जमाने में अपने आप होने वाली कोई चीज नहीं. जैसे कि भूदान मूवमेंट था कि कुछ लोग क्या करें, अपने आप नहीं हुआ वो सक्सेसफुल. अगर दे भी रहे थे तो क्या दे रहे थे, इनफर्टाइल लैंड को वो दे रहे थे. तो कहीं ना कहीं अपने वाला जो मोरल वो चीज है, अगर इतना ही मोरल थे तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था. लेकिन वो मोरलिटी काम नहीं आई, तो फिर कैसे हम ये उम्मीद करें कि आगे चल के भी मोरल होंगे. इस वजह से फिर अम्बेडकर फिलॉसफी को लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बेड किया गया, और उसकी वजह से रिजर्वेशन का ये पूरा डिबेट है. सवाल ये है कि रिजर्वेशन आपके हिसाब से सही है या गलत है ना. क्या करना चाहिए रिजर्वेशन में? रिजर्वेशन को कंटिन्यू करना चाहिए या रिजर्वेशन को स्टॉप कर देना चाहिए? रिजर्वेशन में और क्या करने की जरूरत पड़ेगी? तो प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से नेक्स्ट टाइप कंक्लूजन ऐसा करके हम सुनेंगे. तो स्टार्ट करेंगे. जो भी बोलना चाहेगा